Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We start with technical and derivatives outlook. So, in yesterday's session, we saw that Nifty has almost closed flat. It was marginal up by 2 points, and the close was 19,396. So, if you look at the chart pattern, it looks like Nifty is forming a base at this 19,200 levels, and at least for the week, we believe that this level will be held. So the levels to watch is 19,500. So I believe if this 19,500 level is taken out, maybe today, tomorrow, then I think there will be some upside bias, and this 19,250 will act as a short-term support. So largely, we still maintain 19,000 and 19,000 as a range for the Nifty, but then within that, for the week specific, there can be a positive bias. 19,500 is the immediate trigger we need to keep a watch on. Above that, there can be some short covering as well as in the Nifty index, and that can take it to 19,800. And over and above, if it stays above 19,800, then it can move up to 20,000 also. So bias for the day and for the next 3-4 days remains positive. So and same thing looking at the Bank Nifty. Bank Nifty is somehow not that strong. It is facing resistance near 44,000. Even yesterday, the Bank Nifty was flat, marginally down by -8 points. So technically, the larger range for the Bank Nifty, the trading range was 43,000 on the lower side and 44,500 on the higher side. So this 1,500 points is the range for the Bank Nifty. So if even look if we look at today for the from the trading perspective, I think if 44,300, that is a very small resistance with from the intraday point of view. If those levels are taken out, then there can be some positive bias in the Bank Nifty as well. So range bound activity, Nifty is looking positive. I'm more convinced on the Nifty part. So Nifty above 19,500, we'll bet for another 300, 400 points on the higher side. Coming to FI data, coming to this derivatives data. So this Nifty future in yesterday's session has seen a short build up to the tune of 0.03%, which was hardly the open interest has gone up by 75 contracts, which is nothing. The put call ratio has dropped from 1.08 to 0.92%. The PCR has come below one ratio. The major call rating was seen as 19,400. So on an immediate basis, this 19,400 is the resistance. So once we start trading about 19,400, then this may also act as a support. On the lower side, 19,300, there's a lot of put writing. So that is going to act as a support right now. In Bank Nifty, so Bank Nifty also has seen a short build up to the tune of 0.63%, and the OI has increased by some 900 contracts. So there was a slight short build up in Bank Nifty in yesterday's session, and this PCI data is also declined from 0.96 to 0.83 levels. So, and if you look at the writing data, so 44,000 is acting as a resistance. So there is a lot of call writing, and on the lower side, again the same level 44,000. So this 44,000 is a major level, either make or break level. So if Bank Nifty stays above 44,300, then can be some strength can come in Bank Nifty, and even there can be some short covering also. So yesterday there were a lot of stocks which moved higher. So we believe this Tata.com, which we already had the position, is still looking good on chart. Engineers India is looking good on chart. United Spirits is something which is very positive on chart from the trading point of view. So there are many stock specific actions which are looking good. Besides that, even the hotel stocks like Lemon Tree and Chalet Hotels, which you do keep recommending, is also looking very positive on charts. So bias for the day is positive. We'll look for the Nifty to cross 19,500. If that is taken out, then we'll further talk of 300, 400 points on the higher side. So that's the technical view. I'll hand over to Bhavesh sir for more research updates. Thank you. Hello. So good morning, team. First update on IT sector. So on Monday, S&P has cut ratings on Associated Bank Corp and Valley National Bank Corp on funding risk and higher reliance on broker deposits. Also, it is downgraded UMB Financial Corp and Commercia Bank. This is little negative for IT sector because this is also accompanied by rising mortgage rates. So banking
Banks in America are one of the largest clients for IT companies. Second on Newgen. So Newgen has won an order of $10 million, which is executable for 3 years, and it is positive. Third, positive, small positive news for TCS is that there was a lawsuit that was slapped on TCS 8 months back for discrimination of visa norms. But now one out of the three cases, one charge has been dropped, so that is positive. And lastly, on Lemon Tree, so Lemon Tree has signed two new properties, one in Bhubaneswar, which will be operational by end of FY24, and second would be in Kasauli, Himachal Pradesh, which will be operational in FY26. So both this will have 50 rooms, and we are very positive on this sector, and also on this stock have a buy rating with a target price of 110. So that's it for me. Over to you, retail team. Thank you, sir. Good morning, everyone. Few updates from my side. First update on BEML. So, company bags order worth 101 crore from Ministry of Defence for the supply of command post vehicles. Then next update on rights. Rights has emerged as the lowest bidder in the tender floated by the Railway Board. So the estimated order value is 65.4 crore. So this is a positive news for the rights. Then Hindalco is invest around 2000 crore for the first ever copper and e-waste recycling facility. Then Marksans Pharma Company gains a US FDA nod to flu drug. Then Adani Total Gas Company has partnered with Prakriti E-Mobility to develop electric vehicle charging infrastructure in New Delhi. NBCC company signed an MOU with the Delhi Metro to work together in the field of building and infrastructure development in overseas. The next update on Zydus Life, company will complete the acquisition of 6.5% stake in MyLab Discovery Solution in next 20 to 30 days. Rights company has signed MOU with NHPC Limited to collaborate and comprehensive consultancy service for rail infrastructure facilities. The next update on Somani Ceramic company entered into a joint venture to operate Serapro Nepal and acquire 30% stake in it. And CNPL will establish a tile manufacturing facility in Nepal. Then Linde India company received an LOA from letter of acceptance from IOCL for setting up a air separation unit for production and supply of instrument air. Then Pyramid Enterprises Board approved public issuance of NCDs for up to 3,000 crore. Then next update on Vodafone Idea. Vodafone Idea plans to clear about 2,400 crore of dues to the government by September as per PTI reported. Then Union Bank QIP issue price set at rupees 86.55 a piece as per the Bloomberg report. Then next update on SGS Enterprises. Evergraph Holding has sold partial stake in SGS Enterprises through multi-block deal. And then IndiaMart company received shareholders approval for the buyback of 12.5 lakh shares at the price of 4,000 through tender offer. Then Exicades company complete the acquisition of GmbH, that's strengthening its position in the automotive vertical and enhancing its presence in Germany. The next update on Shriram Properties, the Omega TC Sapri Holdings sold 39 lakh shares, that is 2.3 percentage at 78.44 rupees. Then Sula Vineyards promoter and managing director and CEO Raju Samant had sold 0.99 stake, reducing his total stake 24.98 percentage. Then JTL Industry, that Mohinder Pal sold 10 lakh shares, which is 1.2% at 380.83. The next update on Torrent Pharma and Cipla. As per the report by the Economic Times, Torrent Pharma has joined the race to buy out the Cipla's promoter stake held by the Hemd family, and it is looking to form a consortium with P funds and has held discussion with a few of them as per the report. Then Titan, as per Economic Times, Titan is now majority owned. Trading has challenged a show cause notice from the ED that a like company had violated rules between 2011 to 2014.
by receiving foreign direct investment, that is FDI, and it accused Scotland of violating the Foreign Exchange Management Act. And the notice served on March 28, 2022 said that FDI was not allowed in single brand retail at the time. Next update on TVS Supply Chain Solutions. So the TVS Mobility Group company will make its debut on BSE and NSE on 23rd August, that is today. The issue price was fixed at 197 per share. Then Adani Energy, BSE and National Stock Exchange have imposed fine of around 2.24 lakh each on the company for certain non-compliance, and the fines have been imposed for a non-compliance with requirement to the composition of the board and including failure to the appoint movement director, the company said in the exchange filing. The next update on Polycab India, the electric equipment maker has issued a comfort letter to HDFC Bank for the enhanced borrowing facility from 52 crore to 89.97 crore to be availed by the subsidiary Tirupati Reels, and the subsidiary will use fund for working capital and capital expenditure to the meet its business requirement for manufacturing business. Then last update on Geo Financial, the decision to remove Geo Financial Services Limited from all key indices of BSE including Sensex has been deferred by the another 3 days. So that's it from my end. I will hand over to Shantanu for Hindi conversion. Thank you and over to you, sir. या थैंक यू मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आज के हिंदी अपडेट्स के साथ। फर्स्ट अपडेट जो है वो ओवरऑल आईटी सेक्टर पे है, जहाँ पे एसएनपी की अगर बात करें तो मंडे को इन्होंने जो इनके रेटिंग्स है एसोसिएटेड बैंक और पे एंड वैली नेशनल बैंक और पे उनको कट किया था बेस्ड ऑन द फंडिंग रिस्क जो इन पे चल रहे थे एंड हायर रिलायंस जो इनका है ऑन ब्रोकर डिपॉजिट्स। इसी के साथ अगर बात करें तो एसएनपी ने यूएमबी फाइनेंशियल कॉर्प को भी डाउनग्रेड किया है एंड कॉमेरिका बैंक जो है जहाँ पे एक्साइटिंग डिपॉजिट आउटफ्लो एंड हायर इंटरेस्ट रेट के चलते हुए इनको भी डाउनग्रेड किया है। ओवरऑल रेटिंग की अगर बात करें तो ये जो रेटिंग एजेंसी इन्होंने की कॉप रेटिंग ऑन द बैक ऑफ कंस्ट्रेंट प्रॉफिटेबिलिटी इसको भी कट किया है। सो ओवरऑल अगर देखें तो आईटी सेक्टर पे इसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। लेमन ट्री होटल्स के रिगार्डिंग एक पॉजिटिव अपडेट है जहाँ पे कंपनी ने जो है इनके एसेट लाइट ग्रोथ के चलते दो नई प्रॉपर्टीज जो है साइन की है। फर्स्ट जो है वो है लेमन ट्री होटल्स भुवनेश्वर उड़ीसा में एंड सेकंड जो है वो है लेमन ट्री होटल्स माउंटेन रिसोर्ट कसौली हिमाचल प्रदेश में। भुवनेश्वर की जो इनकी प्रॉपर्टी है इसमें 50 रूम्स होने वाले हैं एंड ये एक्सपेक्टेड है कि Q4 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24 से ऑपरेशनल होगी। जबकि अगर सेकंड प्रॉपर्टी कसौली की अगर बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल 60 रूम्स एक्सपेक्टेड है एंड ये Q3 से ऑपरेशनल Q3 ऑफ FY 2026 से ऑपरेशनल होने की बात चल रही है। सो ओवरऑल एक काफी पॉजिटिव अपडेट होगा लेमन ट्री होटल्स के लिए। अगर स्टॉक की बात करें तो हमारा बाय रेटिंग जो है वो मेंटेन रहेगा विद द टारगेट प्राइस ऑफ 110। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स की अगर बात करें तो बीईएमएल में कंपनी जो है इन्होंने एक 101 करोड़ रुपीस का ऑर्डर लिया है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये ऑर्डर जो है ये फॉर सप्लाई ऑफ कमांड पोस्ट व्हीकल, जो एक पॉजिटिव अपडेट है बीईएमएल के लिए। राइट्स की अगर बात करें तो कंपनी जो है एक लोएस्ट बिडर के तौर पर इमर्ज हुई है फॉर द टेंडर फ्लोटेड बाय रेलवे बोर्ड। ओवरऑल जो एस्टिमेटेड ऑर्डर वैल्यू है इसकी वो है ₹65.4 करोड़ की। सो अगेन एक पॉजिटिव अपडेट रहेगा राइट्स के लिए। हिंदाल्को की अगर बात करें तो कंपनी जो है ये ₹2000 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है फॉर द फर्स्ट एवर कॉपर एंड ई वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटी। सो अगेन एक पॉजिटिव अपडेट है हिंदाल्को के लिए। मार्क्स एंड फार्मा की अगर बात करें तो कंपनी पे एक पॉजिटिव आउटलुक रहेगा बिकॉज यूएसएफडीए का इनको एक जो है नॉड मिला है फॉर फ्लू ड्रग। अदानी टोटल गैस की अगर बात करें तो कंपनी ने प्रकृति ई मोबिलिटी के साथ पार्टनर किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू दिल्ली के अंदर। सो अगेन एक पॉजिटिव आउटलुक है, पॉजिटिव अपडेट है अदानी टोटल गैस के लिए। एनबीसीसी की अगर बात करें तो कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है दिल्ली मेट्रो के साथ, जहाँ पे ये दिल्ली मेट्रो के साथ
काम करके जो फील्ड ऑफ बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पे वर्क करेंगे। सो ओवरऑल एक पॉजिटिव अपडेट रहेगा एनबीसीसी के लिए। जायडस लाइफ की अगर बात करें तो कंपनी ने जो है 6.5% का एक्विजिशन कंप्लीट किया है माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस में, करने वाली है रादर इन द नेक्स्ट 20 to 30 days। ओवरऑल एक पॉजिटिव अपडेट रहेगा जायडस लाइफ के लिए। नेक्स्ट अपडेट जो है वो है राइट्स के ऊपर, जहाँ पे अगेन कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है एनएचपीसी लिमिटेड के साथ टू कोलैबोरेट ऑन कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये जो होगा वो होगा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए। एक पॉजिटिव अपडेट रहेगा राइट्स के लिए। लिंडे इंडिया की बात करें तो कंपनी को एक एलओए मिला है फ्रॉम आईओसीएल फॉर सेटिंग अप एयर सेपरेशन यूनिट। ये जो होगा वो प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ इंस्ट्रूमेंट एयर के लिए होगा। सो एक पॉजिटिव अपडेट रहेगा लिंडे इंडिया के लिए। पिरामल इंटरप्राइजेस की अगर बात करें तो बोर्ड ने इसका जो पब्लिक इशुएंस ऑफ एनसीडीज है इसको अप्रूव किया है। ये जो ओवरऑल इशुएंस होगा वो होगा अप टू ₹3,000 के लिए। वोडाफोन आइडिया की अगर बात करें तो कंपनी जो है वो अपना ₹2,400 के ड्यू जो है वो क्लियर करने का प्लानिंग कर रही है। ये ड्यूज जो है वो है गवर्नमेंट के लिए। सितंबर के महीने तक कंपनी का प्लान है कि ये ड्यूज क्लियर किए जाए। यूनियन बैंक की अगर बात करें तो बैंक जो है अपना क्यूआईपी इशू प्राइस बैंक ने सेट किया है एट ₹86.55 पीस अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग। नेक्स्ट अपडेट जो है वो है एम्फेसिस के ऊपर, जहाँ पे एलआईसी ऑफ इंडिया ने अपना जो शेयर होल्डिंग है इस आईटी कंपनी में वो बढ़ाया है 4.99% से 5.05% तक। इंडिया मार्ट की अगर बात करें तो कंपनी को शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिला है इनके बायबैक के लिए, जो होगा फॉर 12.5 लाख शेयर एट अ प्राइस ऑफ ₹4,000 थ्रू अ टेंडर ऑफर। श्रीराम प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो ओमेगा टीसी साइबर होल्डिंग्स जो है इन्होंने 39 लाख शेयर्स जो है सेल किए कंपनी के, जो अराउंड 2.3% का स्टेक होता है, और जो प्राइस है वो है 78.44 रुपीज। नेक्स्ट अपडेट जो है वो है सुला वाइनयार्ड्स के ऊपर, जहाँ पे जो इनके प्रमोटर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ मिस्टर राजीव सामंत है, इन्होंने 0.99% स्टेक सेल किया है। ओवरऑल इनका जो स्टेक था वो रिड्यूस हुआ है टू 24.98%, जो थोड़ा सा एक नेगेटिव अपडेट रहेगा सुला वाइनयार्ड्स के लिए। अदानी एनर्जी की अगर बात करें तो बीएसई और एनएसई दोनों भी जो एक्सचेंजेस है इन्होंने एक फाइन इम्पोज किया है कंपनी पे ऑफ ₹2.24 लाख, जो है फॉर सर्टन नॉन कंप्लायंस। ये जो फाइन है वो इम्पोज किए है जहाँ इसलिए तक जहाँ पे कंपनी ने जो है कुछ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं किए थे। जिसमें से फर्स्ट था कि इन्होंने कोई भी किसी भी वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया था। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है पॉलीकैप इंडिया के ऊपर, जहाँ पे कंपनी जो है इन्होंने एक कंफर्ट लेटर इशू किया है टू एचडीएफसी बैंक। ये जो कंफर्ट लेटर है ये है फॉर एनहांसमेंट ऑफ बोरोइंग फैसिलिटी फ्रॉम ₹52 टू ₹89.97, जो अवेल किया है बाय सब्सिडरी तिरुपति रीज। लास्टली जियो फाइनेंशियल की अगर बात करें तो जो डिसीजन था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को निकालने का सारे इंडाइसेस ऑफ जो है ऑफ बीएसई यहाँ से, तो इंक्लूडिंग सेंसेक्स, ये जो है ये डिफर किया गया है नेक्स्ट जो है और 3 दिन से। ओवरऑल अगर मार्केट की अगर बात करें टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स पर्सपेक्टिव से, तो फ्रॉम द वीकली एक्सपायरी पर्सपेक्टिव जो कल होने वाली है निफ्टी की अगर बात करें तो अभी निफ्टी जो है एक नैरो रेंज 19,300 से लेके 19,500 इसके बीच में ट्रेड कर रहा है। सो जैसे ही इस रेंज के बाहर एक ब्रेकआउट आता है वैसे ही हमको डायरेक्शन के रिगार्डिंग थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। अगर 19,500 ऊपर की तरफ निफ्टी ब्रेक करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आने की पॉसिबिलिटी है। अगर एक बड़ी रेंज की बात करें तो 18,800 जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा नीचे की तरफ, जबकि ऊपर की तरफ 19,800 तक का रेजिस्टेंस हम कंसीडर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी को कॉन्स्टेंटली 44,000 के ऊपर होल्ड करने में जो है इशू आ रही है। कल के सेशन में भी हमने देखा कि 44,000 के ऊपर थोड़ी देर ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी को वहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला था। सो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा टू वॉच आउट फॉर फ्रॉम द वीकली एक्सपायरी पर्सपेक्टिव। उसके अलावा अगर लेवल्स की बात करें तो 43,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा, जबकि ऊपर की तरफ 45,000 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। अगर कुछ स्टॉक्स की बात करें जिसपे आज के सेशन में नजर रखी जा सकती है तो वह है हिंद कॉपर, टाटा कम्युनिकेशन और मैकडॉवेल्स दैट इज यूनाइटेड स्पिरिट्स।
एफआईआईज और डीआईएस की अगर बात करें तो कल के सेशन में एफआईआईज ने 495.17 करोड़ की सेलिंग की थी, जबकि डीआईएस ने 533.75 करोड़ की बाइंग की थी। अगर फ्यूचर डेटा की बात करें तो कुछ स्टॉक्स जहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप देखने मिला कल के सेशन में वो थे एस्कॉर्ट्स, डिक्सन टेक और पॉलीकैब। जबकि कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप देखने मिला वो थे कोलपाल, गुजरात गैस लिमिटेड एंड दीपक नाइट्रेट। So this was all from our end. Thank you for attending the morning con call. Have a good day.